गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कोर गैप्स इन इंडिया स्टार्टअप प्रायोरिटीज़। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। कमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है उन्होंने रिसेंटली रिमार्क किए थे रिगार्डिंग कंपेयरिंग दी इंडियन और चाइनीज़ स्टार्टअप्स, और उसकी वजह से एक वाइटल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है इंडियन स्टार्टअप कम्युनिटी में। तो इंडियन स्टार्टअप्स का उनका कहना था कि ऑनलाइन डिलीवरी, बैटिंग ऐप्स पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, जबकि चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स जो हैं वो स्ट्रेटजिक सेक्टर्स में एंटर कर चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एआई। कमर्स मिनिस्टर ने कहा कि इंडियन स्टार्टअप्स ज़्यादातर फूड डिलीवरी, इंस्टेंट ग्रॉसरीज, इन्फ्लुएंसर कल्चर, फैंटेसी स्पोर्ट्स इसी पर ही फोकस रख रहे हैं, और कहा है कि क्या सिर्फ यही हमारे इंडिया के फ्यूचर पोटेंशियल को हम दिखाना चाहते हैं। चाइनीज़ स्टार्टअप्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, एआई, रोबोटिक्स, लॉजिस्टिक्स, इन सब में जा चुके हैं, और इसलिए हमारे को भी एक ज़रूरत है कि अपनी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्ट्रेंथन करें, डेवलप करें। इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंट आईपी जो है फ्रंटियर सेक्टर्स में लैग कर रहा है अगर हम चाइना से कंपेयर करें। चाइना जो है वो ईवी और बैटरी टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है, इवन वेस्टर्न कंपनीज़ को भी आउटपेस कर रहा है। अमेरिकन फर्म जैसे ओपन एआई और एंथ्रोपिक ने ग्लोबली लीड किया है, और चाइना ने भी अपना डीप सीक के साथ एक कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया ने अभी तक कोई भी ग्लोबली कंपेटिटिव एआई मॉडल अभी तक नहीं बनाया है। इंडिया ने मेजर कंज्यूमर फेसिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, और वो इंक्रीज्ड इंटरनेट एक्सेस और अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के ऊपर फोकस्ड हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को सर्व कर रहे हैं, तो मतलब उसका एक मैक्सिमम लिमिट है कि उसकी स्केलेबिलिटी उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की तो स्पेंडिंग पावर कम है, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ चैलेंजेस होंगे इन सेक्टर्स में या इन स्टार्टअप्स के लिए। ग्लोबल एक्सपेंशन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। चाइनीज़ कंपनीज जैसे टिकटॉक, शीन, अलीबाबा ऑलरेडी ग्लोबली सक्सीड हो चुकी हैं, तो इंटरनेशनल ऑडियंस को वो ऑलरेडी कैटर करती हैं, तो उनसे कम्पीट करना हमारे इंडियन ब्रांड्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। चाइना जो है वो ग्लोबल हब है टेक मैन्युफैक्चरिंग का। इंडिया जो है चाहे स्मार्टफोन असेंबली में प्रोग्रेस तो किया है, लेकिन फिर भी अभी हम चाइनीज़ कंपोनेंट्स पर ही हैविली रिलायंट हैं। चाइना के पास लगभग 6000 डीप टेक कंपनीज़ हैं, मतलब जो एडवांस साइंटिफिक इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रूज में काम करती हैं, और लगभग 100 चाइनीज़ डीप टेक कंपनीज जो हैं वो पब्लिक भी जा चुकी हैं। इंडिया जो है स्ट्रगल करता है डीप टेक स्पेस में, क्योंकि सिवियर फंडिंग क्रंच है। इन्वेस्टर्स उसको हाई रिस्क वेंचर्स देखते हैं, और उनको लगता है कि इसकी जो है वो ग्रोथ और एबिलिटी नहीं रहेगी इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स की कि वो ग्लोबली कम्पीट कर सकें। इंडिया ने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्पेस में ग्लोबल मार्क अपना दिखाया है, खासकर जोहो, फ्रेशवर्क्स, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ यहाँ पर आई हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ लार्जली कॉस्ट एडवांटेजेस की वजह से ही जो है वो ड्रिवन है, रादर देन ग्राउंड ब्रेकिंग कोई इनोवेशन। यूपीआई जो है ऑफ कोर्स ग्लोबल स्टैंडर्ड है एक डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में, लेकिन यूपीआई जो है वो फ्री टू यूज़ है, उसकी कोई आप उसको एज एन आइडिया, बिजनेस आइडिया नहीं देख सकते हो। लेकिन स्टार्टअप लीडर्स का इस क्रिटिसिज्म को रिएक्शन ये आया है कि उन्होंने कहा है कि हमने 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट की हैं, हज़ारों करोड़ों टैक्सेस पे किए हैं, एफडीआई लेकर आए हैं। तो इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली हाई ग्रो जब करेगा, तो धीरे धीरे जो है एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे डीप टेक जो है सेक्टर्स में घुसने लगेंगे। और कहा है कि इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स को लैक ऑफ कैपिटल है और इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं है, तो एक तरह से गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। तो ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स पर। तो ये फाउंडिंग होती है हमारी, जब WHO बना था 1948 में, और ये 1950 से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इस बार का थीम था हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। तो एक ईयर लॉन्ग कैंपेन है मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विमेन एंड मैन इन इंडिया 2024। ये रिपोर्ट ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिसेंटली 26th एडिशन निकाला है विमेन एंड मैन इन इंडिया 2024 रिपोर्ट का। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे रहा है हमें जेंडर लैंडस्केप का इंडिया में। कुछ जो है डेटा देता है हमें, जैसे पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो इसमें जो अगर हम हाईलाइट्स देखें, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है एनरोलमेंट का अगर हम देखें प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में या एजुकेशन में, तो वो हाई रहा है एज़ कम्पेयर टू पिछले 2 साल। अपर और प्राइमरी लेवल पर जो एनरोलमेंट नंबर्स है लगभग सेम ही रहे हैं बॉयज़ और गर्ल्स के। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है अगर हम उसको पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी विमेन जो है वो 39%
के आसपास सभी बैंक अकाउंट्स का 39% जो है वो विमेन ओन कर रही हैं, और टोटल डिपॉजिट्स का 7% ओन कर रही हैं, मोस्ट प्रोमिनेंटली रूरल एरियाज़ में। फीमेल पार्टिसिपेशन भी कैपिटल मार्केट में ग्रो हो रही है। राइजिंग परसेंटेज ऑफ फीमेल हेडेड प्रोप्राइटरी एस्टैब्लिशमेंट्स भी हमें देखने को मिल रही है अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और अदर सर्विसेज सेक्टर। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वोटर्स भी ग्रो हो रहे हैं और इंक्रीजिंग शेयर है फीमेल्स का। 2024 के जनरल इलेक्शंस में हमने देखा कि फीमेल वोटर टर्नआउट जो है वो इवन मेल टर्नआउट से ज़्यादा था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ट्रेंड्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी 2002-2023 रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2023 के अगर हम आंकड़े देखें तो इंडिया जो है वो सेकंड हाईएस्ट मैटरनल डेथ्स ग्लोबली के लिए रिस्पॉन्सिबल था। डी और कॉन्गो के बाद जो है वो और डी आर कॉन्गो के साथ वो शेयर किया इंडिया ने स्पेस, सेकेंड ओनली टू नाइजीरिया। तो ये न्यू रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस मैटरनल मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटरजेंसी ग्रुप की है, जिसमें WHO, यूनिसेफ, UNFPA और वर्ल्ड बैंक ग्रुप आता है। उन्होंने रिपोर्ट निकाली है कि 2023 में एस्टिमेटेड 2,60,000 मैटरनल डेथ्स हुई हैं वर्ल्ड वाइड, जबकि 40% रिडक्शन देखने को मिला है मैटरनल मॉर्टेलिटी में सिंस 2000, और पहली बार कोई भी कंट्री एक्सट्रीमली हाई मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो की तरफ नहीं बढ़ रही है। जबकि ये गेन्स तो हुए हैं, लेकिन सब सहारन अफ्रीका अभी भी 70% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइजीरिया में हाईएस्ट नंबर है मैटरनल डेथ्स का। सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा मैटरनल डेथ्स हैं, इंडिया, DR कॉन्गो और पाकिस्तान। चाइना, जिसकी इंडिया के करीब पॉपुलेशन है, सिर्फ वहाँ पर 1400 मैटरनल डेथ्स जो हैं वो हुई हैं 2023 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, समाग्लुटाइड। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट इंटरनेशनल मल्टी सेंटर क्लिनिकल स्टडी ने ऑब्जर्व किया है कि सेमाग्लुटाइड जो है एक मेडिकेशन जो यूज़ की जाती है प्राइमरीली टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी, उसकी वजह से जो है अब उसका वो रिड्यूस कर सकती है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को बाय 14%। तो सेमाग्लुटाइड है क्या? मिमिक करता है GLP-1, जो कि एक नेचुरल हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को, एपेटाइट को, और इसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने में टाइप 2 डायबिटीज़ भी और वेट लॉस भी। इंजेक्टेबल और ओरल टैबलेट दोनों फॉर्म में आता है। अगर हम फाइंडिंग्स देखें इस ट्रायल की, तो ये फेज़ 3 डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी थी। इसमें देखा गया कि 14% रिडक्शन देखने को मिली कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हेडियन प्रोटोक्रस्ट। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू इंटरनेशनल स्टडी है, ऑस्ट्रेलिया में की गई है, जिसमें देखा गया कि केमिकल सिग्नेचर्स जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स को एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे हेडियन प्रोटोक्रस्ट पीरियड में। तो हेडियन प्रोटोक्रस्ट एक अर्लीस्ट नोन क्रस्ट ऑफ द अर्थ थी का पीरियड था, जब आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर बनी हेडियन इयॉन में, जो प्लैनेट का फर्स्ट जियोलॉजिक एरा था। 6 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास ये शुरू हुआ था, और ये पीरियड जो है हेडीज़ के नाम पर है, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है। तो हुआ क्या कि अर्थ जो है अपने पहले 200 मिलियन ईयर्स में पार्शली मोल्टन स्टेट में थी, वाइड स्प्रेड वॉल्केनिक एक्टिविटी होती थी, और मेटेओराइट बॉम्बार्डमेंट से ये बार बार जो है वो मोल्टन ही रहती थी स्टेट में। तो ये मैग्मा ओशन था एक बहुत बड़ा, जब वो धीरे धीरे कूल होने लगा तो सरफेस जैसे जैसे कूल हुआ तो सॉलिड क्रस्ट बढ़ने लगा। लेकिन ऑफ कोर्स बार बार जो है ये मीटेरॉइड स्ट्राइक्स होते थे, या फिर ये स्टेबल नहीं हो पाता था क्रस्ट। लेकिन जब थिक सेगमेंट्स बनने लगे प्रिमिटिव क्रस्ट के, तो वो कंसोलिडेट होके फर्स्ट प्रोटो कॉन्टिनेंट्स बने उसकी वजह से। और फिर जो ये क्रिस्टल प्लेट्स बनी, ये धीरे धीरे मेंटल से जो है ड्रिफ्ट होने लगी और इंटरेक्ट करने लगी वेरियस वेज में, जैसे कोलाइड होने लगी, स्लाइड पास करने लगी, सबडक्ट होने लगी एक दूसरे के नीचे। तो ये अर्ली प्लेट मूवमेंट से ही प्लेट टेक्टोनिक्स की जो है फाउंडेशन हमें देखने को मिली, और इसने केमिकल सिग्नेचर्स जो है अर्थ के क्रस्ट में जो है लीव कर दिया। उसकी वजह से हम ये हिस्ट्री ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रिवर ब्लाइंडनेस। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्लैक फ्लाइज के ऊपर स्टडी करते हुए होप दी है रिवर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने की। तो DNA बार कोडिंग एक्यूरेटली इंट्रोड्यूस की गई है टू आइडेंटिफाई ब्लैक फ्लाई स्पीशीज़। तो ये जो है डिसीज़ कंट्रोल और वेक्टर मैनेजमेंट में हमें हेल्प करेगा। तो रिवर ब्लाइंडनेस क्या होता है? रिवर ब्लाइंडनेस एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है जो पैरासिटिक वॉर्म से होती है। ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है ये बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज की वजह से। सिम्टम्स इसमें इंटेंस स्किन इचिंग होगी, डिसफिगरिंग होगी, स्किन चेंजेस होंगे, परमानेंट विजन लॉस हो जाता है, ब्लाइंडनेस होती है। ग्लोबली ये ट्रैकोमा के सेकंड नंबर पर आती है, ट्रैकोमास के बाद, और इन्फेक्शन रिलेटेड ब्लाइंडनेस में।
ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर ही डिपेंडेंट होता है यूजिंग आइवरमेक्टिन। और WHO के हिसाब से रिवर ब्लाइंडनेस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, खासकर रिमोट और रूरल एरियाज़ में। So now let us see all these topics in English. So the first topic is core gaps in India's startup priorities. This topic is important for your social issues. So Commerce Minister Piyush Goyal ji has made some remarks regarding the focus of Indian and Chinese startups, and he has sparked a vital conversation regarding the same. So he's saying that while Indian startups are largely concentrating on areas like uh, online delivery and betting apps, Chinese counterparts are advancing in strategic sectors like electric mobility and AI. So, Commerce Minister has contrasted Chinese and Indian startup ecosystems, and he has questioned whether these ventures truly represent India's future potential. Okay, so so he has questioned whether so he has said that Chinese startups are focusing on advanced sectors like electric vehicles, battery tech, semiconductors, AI, robotics, and logistics. But India is focused on food delivery, instant groceries, influencer culture, fantasy sports. So, therefore, there is a need for India to develop its own intellectual property. And India lacks significant IP in frontier sectors, especially when compared to China. So China leads in EV and battery technology, outpacing even Western companies. So while American firms like OpenAI and Anthropic have led globally in AI, China has also made headlines with the DeepSeek. India is yet to produce a globally competitive AI model. Okay, so India has built some major consumer-facing platforms, but these firms are leveraging only increased internet access and urban discretionary spending. Indian startups primarily serve the domestic market, which limits scalability because there is limited potential. Because we have seen that about 90% of India's population lacks spending power, so therefore growth challenges are there. Global expansion is difficult because of strong existing competitors. For example, we have seen Chinese companies like TikTok, Shein, Alibaba. They have already succeeded globally, so they already cater to international audiences, and they have built strong global brands as well. China also remains the global hub of deep tech manufacturing. India may have made some progress in smartphone phone assembly, but it still relies heavily on Chinese components. So China has about 6,000 deep tech companies, which basically involves advanced scientific or engineering breakthroughs. Over 100 of them have already gone public. India struggles in the deep tech space because of a severe funding crunch. Investors also see them as high risk ventures and they hesitate to support them. This also limits their growth and ability to compete globally. But India has made global mark in the software as a service space. But this growth is also largely driven by cost advantages rather than any groundbreaking innovation. We have a good example of UPI, but UPI is free to use, so therefore making it or make monetizing it is a challenge for service providers. In response to the minister's statement, experts have highlighted that some startups have created millions of jobs. They have paid thousands of crores of taxes annually. They have brought FDI in India. So they are calling it, Indian innovation miracle. They are also arguing that India must aim for consistent high growth before criticizing the entrepreneurs. China too started with consumer services before transitioning to deep tech. They are also highlighting that the presence of promising Indian deep tech startups, but stress that there is lack of capital and enabling ecosystem, which are major hurdles to their growth. So the next topic is World Health Day 2025. This topic is important for your uh, social issues. Every year on 7th of April, we observe World Health Day to increase global awareness of a varied range of health related concerns. So World Health Day is observed on 7th of April every year because it marks the anniversary of the founding of WHO in 1948. But this day is celebrated since 1950. Every year there is a theme. The theme for this year is Healthy Beginnings and Hopeful Futures,
which is basically focusing on a year-long campaign on maternal and newborn health. So the next topic is Women and Men in India 2024. This topic is important for your social issues. Ministry of Statistics and Program Implementation has recently released the 26th edition of its publication titled Women and Men in India 2024 report. So this is a comprehensive overview of the gender landscape in India, and it provides data regarding population, education, health, economic participation, and decision making, all sourced from various ministries, departments, and organizations. So, highlights of this year's report is saying that gender parity index, which is meant for enrollments at the primary and higher secondary education level, was higher in this year as compared to the last few years, meaning more girls are being enrolled now. At the upper primary and elementary levels, the enrollment numbers have remained same for boys and girls. Labor force participation rate has also improved significantly over the past few years. Women now own about 39.2% of all bank accounts and contribute to 7% of total deposits, with their presence most prominent in rural areas. Female participation in the capital market is also growing. A rising percentage of female-headed proprietary establishments across manufacturing, trade, and other services sectors have also grown. Number of female and male voters are also growing, increasing with the, of course, increasing share of females. In general elections last year, female voter turnout was even higher than male turnout. So the next topic is Trends in Maternal Mortality 2000 to 2023 report. This topic is important for your social issues. So in 2023, India has accounted for second highest maternal deaths globally, tied with the DR Congo with 19,000, second only to Nigeria, according to this report, which is a new report from the United Nations Maternal Mortality Estimation Interagency Group, comprising of WHO, UNICEF, UNFPA, and World Bank Group. So, what the report highlights that in 2023, an estimated 260,000 maternal deaths occurred worldwide, which marks a 40% reduction in maternal mortality since 2000. For the first time, no country was estimated to have an extremely high maternal mortality ratio. Despite these gains, Sub-Saharan Africa accounted for 70% of global maternal deaths. Nigeria had the highest number of maternal deaths. Only 3 other countries more than 10,000 maternal deaths are India, DR Congo, and Pakistan. China, which is having similar population as compared to India, registered only 1,400 maternal deaths in 2023. So the next topic is semaglutide. This topic is important for your science and tech section. So a recent international multi-center clinical study has found that semaglutide, which is primarily used to treat type 2 diabetes and obesity, can reduce the risk of major cardiovascular events by 14%. So this semaglutide mimics GLP-1, which is a natural hormone that helps in regulating of blood sugar and appetite. So it is used to treat type 2 diabetes and aid in weight loss. It is available in injectable and oral tablets forms. So this study was a phase 3 double-blind randomized placebo-controlled study, and this which has revealed a statistically significant 14% reduction in the risk of such cardiovascular events. So the next topic is Hadean protocrust. This topic is important for your environment section. So a new international study led by Macquarie University, Australia, has suggested that the chemical signatures attributed to plate tectonics were already present in the Hadean protocrust. So what is the Hadean protocrust? So it refers to the earliest known crust of the Earth, that is the outermost solid layer, which was formed during the Hadean Aeon, the planet's first geologic era, which began around 6 billion years ago. So this period is named after Hades, that is the god of the underworld. And what were the geological conditions around during the Hadean era? So the Earth, within its first 200 million years, had a surface that was partially molten, and it registered widespread volcanic activity and constant meteorite bombardment from space. So during this time, so there was magma ocean, but it began to cool gradually. At the surface, as the surface started cooling, early fragments of solid crust began to form, but these fragments were not stable and they often broke off, with new layers solidifying, creating an unstable crustal layer. So some thicker segments of this primitive crust eventually consolidated into the first protocontinents, floating on the underlying asthenospheric mantle.
So as these crustal plates drifted across the mantle, they began to interact in various ways, often colliding, sliding past each other, subducting under one another. Okay, so these early plate movements laid the foundation for the plate tectonics, which is a key process in shaping the Earth's geological features. So over time, these interactions left distinct chemical signatures in the Earth's crust, enabling scientists to reconstruct the history of tectonic activity. Okay. So the next topic is river blindness. This topic is again important for your environment section. Zoological Survey of India has done a study on black flies, and it has offered hope for river blindness control, which is a neglected tropical disease. So this study has introduced DNA barcoding to accurately identify black fly species, and this innovation is going to enhance disease control and vector management, especially in vulnerable ecological zones like the Central Himalayas. This river blindness is a neglected tropical disease caused by the parasitic worm, and this disease gets transmitted to humans through the bite of infected black flies. And the symptoms include intense skin itching, disfiguring skin changes, and in advanced cases, permanent vision loss or blindness. Globally, it is second only to trachoma in causing infection related blindness. Treatment relies on mass drug administration using ivermectin, with a minimum 80% therapeutic coverage required for effective control. So, according to WHO, river blindness remains one of the most neglected tropical diseases, especially in remote and rural areas. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.